When are when the exams getting over, students? 22. 22. The 25th को. Yeah. And even you all don't know what is the cut down portion also, isn't it? है ना? वो भी नहीं पता ना तुम लोगों को? हाँ students? No, sir. सर पता है. क्या है? पता है? हाँ मतलब सर हर एक चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा पार्ट डिलीट मतलब कैंसिल कर दिया है ना. तो मैग्नेटिज्म में तो मुझे पता है नहीं था तुम लोगों ने. Didn't tell me anything in magnetism. तो मैग्नेटिज्म में सिर्फ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ही कैंसिल कर दिया. अच्छा. Okay, students. So one thing we'll do now, I can, because I asked even this guy also. तुम्हारा mechanical properties of solids हो गया ना, students? It's completed, isn't it? Yes. The laws of motion also. Yes. Laws of motion also it's completed, isn't it? Yes. Okay, yeah, electrostatics, electric current, magnetism, that is all completed, isn't it? Yes. 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 Okay. Then one thing we'll do like that, students will be going for a simple topic called sound. I'm getting it because we don't know what exactly your college is going to go at. So मैं sound pick up करता हूँ, students. I'm getting it. We'll go for sound. Yes, sir. Okay. The reason is why अगर कोई दूसरा topic होगा तो we can jump onto that because sound is still easy. अगर मुझे बीच में भी छोड़ना होगा तो I can leave it off and we can jump onto some other topic. ठीक है. और साउंड आता है तुम्हारे सीरीज में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत बड़ा चैप्टर है. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बहुत बड़ा चैप्टर. अगर मैं उसको उठा लूं देन इट हैज बीन कंसिस्टेंटली टू बी फिनिश्ड. You can't give a break in between that. I'm getting it. Optics is also bigger in that case. Okay, so we'll go and today we'll keep students just 1 hour session itself only. Okay, we'll keep it accordingly. Only 1 hour session will be keeping it today. Okay, till 5:30. Okay. Students will be going for sound. Now, can anybody tell me what exactly students, according to you all, what exactly sound is, students? Can you tell me? Anybody can tell me what is sound? So according to you, what exactly sound is? तो बता सकता? Yeah, students. So the sound is something that we can hear, something that can be heard. Okay, sound is we can consider, students. You can put down into your books as sound, topic sound, and you can write down over there as a statement, please. Write down sound is an external physical agent. Students, please do write down sound is an external physical agent. Sound is an external physical agent which produces in us a sensation of hearing. Which produces in us a sensation of hearing. Hope you'll have written it properly. Prathamesh Patel, क्या लिखा? Can you tell me, Prathamesh? Prathamesh, can you tell me क्या लिखा तुमने?
Prathamesh Patel, are you there? He's not replying. Prathamesh, if you don't reply, I'll throw you all the lectures. Please reply fast. Yes, Rajesh, क्या लिखा तुमने? Can you tell me, Rajesh? Rajesh, can you tell me what exactly you've written? Shubham, can you tell me? Yes, sir. What is that? External physical agent which produces in us a sensation of hearing. Okay. Okay, absolutely correct. Those who are not answering, students, I'm going to put them into waiting room. Students, what he said, it is absolutely correct. Sound is an external physical agent which produces in us a sensation of hearing. Students, हम लोग जो सुनाई देते students, ये किसकी वजह से है? Because of the external physical agent. What is the external physical agent we see around you? So we can see, consider the air molecules, students. Now, for example, you're sitting at your home and your mom, she's speaking to you. So when she's speaking, students, what is happening? The air molecule starts vibrating in the atmosphere. और ये जो air molecules है, they transfer the energy towards you, and that's how the energy moves in the forward direction, students. So it's the particles which carries the energy, and the particles move from one place to another. Because in gases, what happens? In gases, the atoms and molecules are loosely held, students. वहां पे alignment of gases के अंदर atoms and molecules are not compactly. तो gases यानी air molecules is a medium. I getting it? जैसे वो air molecules will move towards the ear, what happens in that case? It will try to these particular gas molecule, students, will actually enter into the ear of ear of a listener, and then it will strike the membrane. पता है तुम्हारे कानों के अंदर बोलते हैं कान का फिल्म होता है, कान का पर्दा होता है. अगर जोर से चिल्लाओगे तो वो फट जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं. जोर से मत चिल्लाओ, मेरा कान के अंदर का फट जाएगा. It's like that. So what exactly is that? That is called as the eardrum, students. The tympanic membrane. Inside the ear, there is a tympanic membrane, students, and that tympanic membrane starts vibrating. और वो फिर उससे क्या होगा? तुम्हारे जो बॉडी के ह्यूमन बॉडी के सबसे 3 टाइनिएस्ट बोन्स होते हैं. अगर किसी ने पूछा तुम्हारे बॉडी के 3 टाइनिएस्ट बोन्स कहाँ पे, स्टूडेंट्स, तो तुम्हें क्या बोलना है? इट्स इनसाइड द ईयर, इंटरनल ईयर में. और उसको हम नाम देते हैं द 3 ईयर ऑसिकल्स. Students, they are called as 3-ear ossicles, students. These are 3 tiny bones, students, we consider. And these 3 tiny bones we consider are inside the ear. So, वो जो air molecules है, the sound which is trying to vibrate this ear ossicles, and then it has been perceived by the brain through the sound nerves we consider. Okay, that's the organ of corti. Okay, और फिर वो कहाँ पे जाता है? Into the brain. Temporal lobe of the brain, and the brain perceives the information and you are able to hear the sound. So students, जब भी हम sound के बारे में बात करते हैं तो sound है क्या? It's an external physical agent which produces in us a sensation of hearing. We cannot hear sound in vacuum. You can put forward the next point, students. Write on the next point, students. Please write on the next point, students. Write down. Sound waves are elastico mechanical waves. Sound waves are elastico mechanical waves and needs a material medium for their propagation. Sir, can you repeat? Sound waves are elastic or mechanical waves. Elastic or mechanical waves, students, and needs a material medium for propagation.
and needs a material medium for propagation, students. यानी sound को क्या चाहिए मालूम है students? Sound को medium चाहिए. Unless and until surrounding में medium नहीं होगा, sound propagate ही नहीं होगा, students. Sound waves are elastic or mechanical waves, needs a material medium for its propagation. Are you getting it? So in that case, you need a medium for it to travel. Without medium, sound cannot propagate at all. So what are made right on? Sound waves are elastic or mechanical waves, need a material medium for the propagation. Full stop. Continue. Continue, students. Write down. Thus, sound cannot propagate through vacuum. VACUUM. Thus, sound cannot propagate through vacuum. VACUUM. Since sound cannot propagate through vacuum. यानी स्टूडेंट साउंड को मीडियम चाहिए. अगर साउंड नहीं होगा तो तुम्हें आवाज ही नहीं सुनाई देगी. अभी इसी के नीचे एक गिव रीजन लिखो स्टूडेंट्स. लेट्स सी हु कैन राइट डाउन द आंसर फॉर दिस. स्टूडेंट्स होप यू आर राइटिंग द स्टेटमेंट्स. हाँ स्टूडेंट्स, आर यू राइटिंग द स्टेटमेंट? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Put on, and I'm going to explain here what are these elastomechanical waves. I'm going to tell you about that. Okay, आगे हम waves का जब भी classification करेंगे तो I'm going to tell you about that. ये सिर्फ introductory points में दे रहा हूँ students. Now write down the next point, students. Sorry, the under this write down give reason, not next point. Write down give reason. Write down we earthlings. We earthlings, that means we people on the earth. Write down we people on the earth. We people on the earth cannot hear the explosions. Cannot hear the explosions taking place inside the sun. We people on the earth cannot hear the explosions taking place inside the sun, S-U-N. Hope the question is clear. Parth Patel, can you repeat the question? Parth Patel. Yeah. We people on the earth cannot hear the explosion taking के बाद क्या है? Taking के बाद नहीं सुना. Taking place inside the sun. Okay. Can you give an answer, Parth? Answer दे सकते हो? No. देखो यहाँ पे शुभम ने आंसर दे दिया है. शुभम ने पोस्ट किया है. Yes, anybody else? Riya, what about you? हाँ सर, बिकॉज साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम ना, तो फिर स्पेस में तो पूरा वैक्यूम ही होता है. Oh, very good. Why sound cannot propagate through vacuum? क्या लिखा मैंने? Sound waves are elastic or mechanical waves. And they Yeah, need a material for its propagation. absolutely correct. Students, मुझे ये बताओ, हम लोग अभी देखो ध्यान से सुना students. You all are all at your home. सारे अपने घर पे अभी लेक्चर सुन रहे हैं. लेकिन every second students अभी भी every second सन के अंदर एक explosion हो रहा है students. अभी भी सन के अंदर एक एक्सप्लोजन हो रहा है. सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION. एक फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है एवरी सेकेंड. और उससे क्या होता है? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड. स्टूडेंट्स, बहुत सारा हीट, बहुत सारा लाइट और बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन क्या हमें वो आवाज सुनाई दे रही है? आर वी हियरिंग दैट साउंड? स्टूडेंट्स, No, sir. क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि
हमारे अर्थ के लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या है सर? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स, ये एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के बाद में आउटर स्पेस इज सिंपली वैक्यूम। दैट मीन्स देयर इज वैक्यूम बिटवीन द सन। तुम्हें क्या बोलना है? देयर इज वैक्यूम बिटवीन द सन एंड द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। समझ में आ रहा है? There is vacuum between the sun and the layers of atmosphere surrounding the earth. Therefore, we cannot hear. Of course, Samir, there is no air in space. There is no material medium. So now, students, write down the answer for this. Write down. First point. इसका first point लिखो, students. First point लिखना, ये give reason का answer दे रहा हूँ, students. First point. Sound waves are elastic or mechanical waves. Sound waves are elastic or mechanical waves. Needs a material medium for its propagation. So when sound waves are elastic or mechanical waves, needs a material medium for its propagation. Needs a material medium for its propagation. Thus cannot propagate through vacuum. Thus cannot propagate through vacuum. Second point. Second point देखना उसके नीचे. Since there is vacuum between the layers of atmosphere surrounding the earth and the sun. Since there is vacuum between the layers of atmosphere surrounding the sun, layers of atmosphere surrounding the earth and the sun, since there is vacuum between the layers of atmosphere surrounding the earth and the sun, sound cannot reach to the earth. Sound cannot reach to the earth. Finished? Students completed? Yes. So last point, hence we cannot hear the sound from the sun. Hence we cannot hear the sound of explosion from the sun. Students, अगर मैं ये पूछूं, can one can hear on moon? Students, can you hear on moon? Students, No, sir. why? What's the reason? Why is it so that one cannot hear on moon? अगर ये मैंने give reason के लिए पूछा, चलो ये give reason दे रहा हूं मैं. Write down, everyone write down. One cannot hear on moon. Give reason. चलो अभी इसका आंसर लिखो. One cannot hear on moon. Give reason. Please write down your answer with pencil. पेंसिल से लिखना, क्योंकि गलत होगा तो वापस सही आंसर लिखना है तुम्हें. लेकिन पहले अपना आंसर लिखो स्टूडेंट्स. क्वेश्चन ये है, one cannot hear on moon. Give reason.
Yes, Shubham has got the answer. Just like the sun situation, there is a vacuum surrounding the moon. Okay. Students, मुझे बताओ, what is the gravitational acceleration of moon? कोई बता सकता है? Yes, Sujini. Yes, Riya. Yes, Shubham. What is the gravitational acceleration on moon? Fast. Now see. Now mom. कोई आंसर नहीं दे रहा है. Students, moon के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर एस्केप होता है वहां पे, क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ये लिखना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून in 1/6 the gravitational acceleration on the Earth's surface. Gravitational acceleration of the Earth. Therefore, no atmosphere on moon. Thus, vacuum. सबसे पहला पॉइंट ये आएगा, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या लिखना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून. स्टूडेंट्स क्या लिखना है? It's 1/6 the gravitational acceleration on the Earth's surface, students. Continue. Therefore, there is no atmosphere on moon. Therefore, there is no atmosphere in the surface of moon, and thus there is vacuum. And thus there is vacuum, students. Is it clear? Yes, sir. Yes, Preeti Patel, can you answer? क्या लिखा मैंने? फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? प्रीति पटेल. Preeti Patel, can you tell me what is the first point I told you to write down? Preeti Patel, unmute yourself. If you are not, I'm going to throw out the lectures. Preeti Patel, what did I tell you to write down? Okay, Rahul Chaudhary, can you tell me what exactly the point I told you to put down? Rahul Chaudhary, are you there, Rahul Chaudhary? Rahul Chaudhary, what is the first point I asked you? Samir, can you repeat? What did I tell you to write down? Samir, the first point, can you tell me what exactly I told you to write down? Yeah, can you tell me the first point? So moon has 1/6 gravitational force on the Earth. What? What I say? Students, what did he say? Moon has 1/6. Gravitational acceleration. One minute, sir. 1 minute. Yeah. Yes, Samir, can you tell me? Yes, sir. Moon has 1/6 gravitation force by the Earth. Okay. It's gravitational acceleration. चलेगा, it's fine enough. Force नहीं बोलना है, तुम्हें gravitational acceleration बोलना है. So gravitational acceleration of moon, students, is 1/6 the gravitational acceleration of Earth. ये बोलना है
Therefore, there is no atmosphere on the surface of moon. Hence, there is vacuum. Are you getting it? First point ये है students. Everybody please write down correctly क्योंकि ये examinations में questions पूछेंगे theoretically. उस टाइम पे आंसर्स ढूंढने के लिए बैठना मत, ये तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो फिर. तो तुम्हें ये बोलना है gravitational acceleration on moon is 1/6 the gravitational acceleration on the Earth's surface. Therefore, there is no atmosphere on moon. Hence, there is vacuum. Second point, वही लिखना है. Sound waves are elastic or mechanical waves, needs a material medium for its propagation. Since there is vacuum on the surface of the moon, one cannot hear on moon. क्या ये आंसर क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर Yes, हुआ? sir. Yes. Okay. Yes, sir. Now, when I speak about with respect to agar suppose if one cannot hear on moon, suppose if I happen to consider, is that clear? Then can you tell me, students? Then can you tell me how do they communicate? अगर suppose समीर और शुभम को मून पे भेज दिया, तो इन लोग दोनों जन कम्युनिकेट कैसे करेंगे मून पे? एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? सुजनी बता सकते हो? Sign language. अरे वेरी गुड, साइन लैंग्वेज एक है, वेरी गुड. और समीर कैन यू टेल मी और कुछ? और कुछ? तो तुम्हें क्या बोलना है? रेडियो वेव्स. कौन से वेव्स? रेडियो वेव, सैटेलाइट Radio. कम्युनिकेशन. आई गेटिंग इट? यानी तुम जो बोलोगे तो तुम्हारा आवाज पहले सैटेलाइट लेगा, फिर सैटेलाइट से वापस उसको आएगा. And second is sign language. You'll be using it. Absolutely correct. Students, what they've said it is very correct. Is that clear? Okay. Next point, write down. Students, next point. यानी ये दोनों के बीच में बता दिया. Students, next point. Next point, write down, students. Sound is produced whenever an object is set into vibration. Please write down the next point. ये सारे points I'll make you to speak it down. किसी एक को मैं बोलूंगा सारे points बोलने के लिए. Write down. Sound is produced when an object is set into vibration. Examples के अंदर तुम बोल सकते हो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स So में तुम can लिख you सकते हो. repeat the point? मुझे ये पता नहीं चल रहा. आई एम सो स्लोली आई एम स्पीकिंग. यू आर नॉट राइटिंग इट ओवर प्रॉपर्ली. So मैं वो हाँ previous वाला answer लिख रही थी. तो तभी बोलना चाहिए ना. Okay, students, the next point I made it very clear, students. Right on. Sound is produced when an object is set into vibration. Sound is produced when an object is set into vibration, students. Below it, write down examples. Musical instruments. अगर solids में लिया है तो string instruments. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर लिक्विड में लिया है तो एग्जाम्पल आई कैन कंसिडर विल बी जल तरंग. दिस इज द नेम ऑफ द डिवाइस. If I speak about gases, that is air, you can go for flute. Flute, trumpet, bugle, saxophone, mouth organ. है ना स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जब भी तुम गिटार स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है? गिटार आएगा. एग्री?
या अगर तुम मेम्ब्रेन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वो क्या होगा, ड्रम है ना, तबला, कॉन्गो, बोंगो, वो सारे मेम्ब्रेन वाले हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में गिटार आएगा, सितार आएगा, वायलिन आएगा, वीणा आएगा, तंबूरा आएगा, ये सारे एग्जांपल्स आएंगे। लिक्विड में जल तरंग, जल तरंग का मतलब मालूम है स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास में डिफरेंट वेसल्स है, अलग अलग वेसल्स है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। कभी देखा है स्टूडेंट्स तुम लोगों ने जल तरंग जैसा? चाइना क्ले बाउल के अंदर पानी भरा हुआ है और वो स्टिक से उनको मारते हैं, तो जहां पे तुम्हें अलग अलग पानी का लेवल दिखाई देता है तो वहां पे साउंड अलग अलग आएगा। आर यू गेटिंग इट? Yes. एंड द लास्ट वन इज इन गैसेस और एयर। तो उसमें एग्जांपल क्या है, फ्लूट, जैसे कि बांसुरी होती है, फ्लूट, ट्रम्पेट, ब्यूगल, सेक्सोफोन, माउथ ऑर्गन। अब विसल, सिटी मारने आता है कि नहीं आता है? हाँ स्टूडेंट्स, सिटी मारने आता है। दक्षराज, सिटी मारने आता है दक्षराज? राहुल चौधरी, राहुल चौधरी, are you there? नहीं आंसर दोगे तो वापस जाओगे बाहर। राहुल चौधरी, डू यू नो हाउ टू विसल? ब्रजेश, डू यू नो हाउ टू विसल? No, sir. Yes, sir. अरे वाह, ब्रजेश जरा विसल करके बता, विसल करके बता। सर नहीं आएगा आवाज। अरे क्यों नहीं आएगा, मुझे भी तो बोल सकता है, उसका आवाज आ सकता है, तो विसल का क्यों नहीं आ सकता है? हाँ। सर बहुत पतला आता है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे एग्जांपल्स है, उससे हमें पता चलता है कि साउंड कैन बी मेड टू प्रोड्यूस। जब भी ऑब्जेक्ट है, अभी सपोज किसी को तुमने तुमने एक थप्पड़ मार दिया तो ऑफ कोर्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड, है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन में होगा तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड, so ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू वाइब्रेशन, इट प्रोड्यूसेस साउंड। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट। Right on students, right on the next point students. Velocity of sound, put down next, velocity of sound is maximum in solids velocity of sound is maximum in solids velocity of sound is maximum in solids, comma, less in liquids, and least in gases. Velocity of sound is maximum in solids, less in liquids, and least in gases. और देखो एग्जांपल मैंने दिया स्टूडेंट्स, अगर तुमने साउंड को प्रोपोगेट किया इन अ पीस ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टूडेंट्स द साउंड इज मेड टू प्रोपोगेट, उसके नीचे एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट्स, if sound is made to propagate in a piece of iron rod at 0 degree Celsius, see the velocity of sound. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया, नियरली इक्वल टू, ऐसा लिखा मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 5100 मीटर पर सेकेंड। velocity of sound in water, pure water, we consider is how much, 1435 meter per second at 0 degree Celsius. Example, at 0 degree Celsius, velocity of sound in air is nearly equal to, and if I happen to go for dry air, is nearly equal to 331.5 meter per second.
स्टूडेंट्स ये तीनों क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या लिखा मैंने? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू रीड इट आउट? एनीबॉडी ऑफ यू ऑल? At 0 degrees Celsius in iron rod, velocity of sound is 5,100 meter by second. यस. In H2, velocity of sound is 1,435 meters per second. दैट इज प्योर वाटर, ना? प्योर वाटर. Yes. Yes. In dry air, velocity of sound is 331.5 meters per second. And these are all at 0 degrees Celsius, okay? Yes. यानी स्टूडेंट्स साउंड सबसे ज्यादा कहाँ पे है सर? साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड्स में है, सेकंड केस लिक्विड्स में, तीसरा गैसेस में. होप दिस पॉइंट इज रिटन बाय एवरीबॉडी. क्या मैं इसको इरेज करता हूँ? तो कैन आई इरेज दिस? No, sir, just a minute. हाँ. कोई रीजन बता सकता है सॉलिड्स में ज्यादा क्यों है और गैसेस में लीस्ट क्यों है? एनीबॉडी कैन टेल मी द रीजन बिहाइंड इट? Why is the velocity of sound is maximum in solids and least in gases? कृष्ण का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. क्या बात है, तुम लोग तो सारे इंटेलिजेंट हो यार. तुम लोग आंसर देते नहीं हो लेकिन है सारे इंटेलिजेंट. धीरे धीरे खुलना शुरू कर रहे हो. वो भी आधे से ज्यादा पोर्शन कंप्लीट होना है तभी तुम थोड़ा सा बोलना. सुजनी तुम्हारी बोलती बंद हो गई. नहीं सर, इधर ही हूँ। लेकिन तुम कुछ नहीं बोल रहे हो. बाकी सारे स्टूडेंट्स देख कितना आंसर दे रहे हैं. चैट्स में देखो कितना सारा मैसेजेस आ रहा है. रूम में तो इसके लिए और तुम्हारा फ्रेंड तो एब्सेंट हो गया फाद, उसको उठाया नहीं, सुबह से सो ही रहा है. मैं क्या करूँ? देखो, मैं कुछ बोलना नहीं है। बोलना चाहिए ना फाद को. ऐसे क्या कर रहे हो? सबको उठाना चाहिए था. मैं क्यों उठाऊँ सर? अरे he's missing out lectures, Sujini. It's not good. Okay, students. इसके नीचे रीजन लिखो. Please write on the reason below it. And the reason is, students, listen carefully. Velocity of sound is directly proportional to square root of elasticity of medium. Since velocity of sound is directly proportional to root of elasticity of the medium. Since elasticity of solids is more than elasticity of liquids, which is greater than elasticity of gases. Therefore, velocity of sound is maximum in solids and least in gases. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट? क्या लिखा मैंने? स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम. स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी ने इसका आंसर दिया है. कृष्णा कावा ने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. बरोबर है स्टूडेंट्स. सॉलिड्स के अंदर देखो, सॉलिड्स के अंदर ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, दे आर वेरी क्लोजली एंड कॉम्पैक्टली प्लेस्ड. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है. स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होना का मतलब इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगा. लिक्विड्स के अंदर इलास्टिसिटी कम है, गैसेस के अंदर इलास्टिसिटी इज द लीस्ट. यानी गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है,
लिक्विड्स में कम, सॉलिड्स में सबसे कम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तभी जाके जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। तो तुम्हें इसका आंसर कैसे लिखना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। फिर लिखना है, ये 3 साइन है ना, ये सिंस का मतलब है, सिंस 3 डॉट, देयरफॉर नहीं है, सिंस उल्टा ऑफ देयरफॉर। सिंस elasticity in solids is greater than elasticity in liquid, greater than elasticity in gases. Therefore, velocity of sound is maximum in solids and least in gases. क्या ये लिख दिया है सब लोगों ने? Is it written? Priya written? Shubham written? Yes, sir. This is. Can I erase? Yes, sir. Okay. Okay, students. Now, since we have got the point to be considered is, then the next point you can write on, students. Next point you can write on, sound is a form of energy. Write on, students, next point, sound is a form of energy and can be used in order to perform work. Excuse me. So sound is a form of energy and it can be used in order to perform work. Sound is a form of energy and it can be used in order to perform work. Now, can anybody who can give me an example of this? Is sound energy can be used in order to perform work? हाँ, कोई student बता सकता है? Sonar. To perform work, ये तो sonar to detection हो जाएगा. Hello. And sonar is not sound waves; those are ultrasound. चलेगा, fine enough. वो एक frequency, क्योंकि हम audible के बारे में चलो कोई problem नहीं. We can go for that. लेकिन यहाँ पे detection में काम आएगा sonar. कृष्णा, कोई बता सकता है? Sound is a form of energy and can be used in order to perform work. Students. Students, have you heard about opera singers? Have you heard about opera singers? किसी ने सुना है? Anyone? क्या क्या बार-बार students जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे? I don't know what the hell is happening. I'm going to log the meeting now. Yes, students. Anybody can tell me what? Oh, do you know what exactly opera singers are?
No. No? No, sir. Now nobody can enter again, ना students? मैंने लॉक कर दिया मीटिंग को अभी कोई अंदर आ नहीं सकता है। तुम जाओ जाना चाहते हो तो चले जाना, कोई वादा नहीं, बिंदास, नथिंग टू वरी अबाउट इट, लेकिन आ नहीं सकोगे अभी। ओके स्टूडेंट्स, ओपेरा सिंगर्स नहीं पता तुम लोगों को? You know, there are certain people, there are certain singers, especially opera singers are females. शायद तुमने कहाँ पे देखा होगा students, they wear long frock, kind of it, a cloth with long skirts and frock, and they start speaking and the sound is very acute. Students, अगर opera singer को, अगर opera singer के सामने अगर तुमने wine glass रख दिया students, opera singer के सामने अगर तुमने wine glass रख दिया ना students, और वो opera singer यहाँ से sound emit कर रही है, students, she can break the wine glass. Yes, she can break the wine glass. उतना उनका sound is acute, high pitch वाला होता है। वैसे ही स्टूडेंट्स, शायद तुमने, अगर तुम हो सके तो यूट्यूब सर्च करना स्टूडेंट्स, कॉनकॉर्ड, ये टाइप करना स्टूडेंट्स, व्हाई कॉनकॉर्ड आर बैंड, ये टाइप करना यूट्यूब पे या गूगल पे जाना स्टूडेंट्स और टाइप करना व्हाई कॉनकॉर्ड्स आर बैंड। कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट से स्टूडेंट्स, कॉनकॉर्ड शायद देवर इन यूरोपियन कंट्रीज में थे, यूरोप और शायद यूएस में थे, हार्डली उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी, आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा हो गया, 3 या 4 ही ऐसे कॉनकॉर्ड बने हुए थे स्टूडेंट्स। कॉनकॉर्ड सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, जो कि मुंबई टू दिल्ली की जर्नी दे कैन फिनिश इट इन हार्डली 15 to 20 मिनट्स, 20 मिनट में तुम पहुंचते हो, वैसा वाला था। लेकिन उनका टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बहुत आवाज था, तो उनका जो एयरपोर्ट होता था, इट शुड बी नेवर क्लोजर टू द रेसिडेंशियल एरिया। अभी तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा एयरपोर्ट कहाँ पे है? अगर तुम मुंबई में रहते हो तो तुम्हारा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो इंस्टेंट बोलेगा एयरपोर्ट तो विलेपार्ले एंड सांता क्रूज के बीच में। ईस्ट में चले जाओगे तो हाईवे के नजदीक पूरा एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट है, शहर एयरपोर्ट के लगा गया, पूरा लगा हुआ है, यानी वो रेसिडेंशियल एरिया में आ गया ना। वहां के पीपल जो रहते हैं उनके जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होता है, तो हमेशा आवाज आती है, लेकिन कॉनकॉर्ड की बहुत आवाज आती थी, इतनी ज्यादा आवाज आती थी कि बिल्डिंग पूरा वाइब्रेट भी होता था स्टूडेंट्स। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस, साउंड कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, साउंड एनर्जी से तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिलती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी के घर के अंदर मैकेनिज्म होता है, अगर 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 ताली ऐसा गिरा दिया तो लाइट चालू होती है, मुंह से बोलोगे लाइट्स तो लाइट्स ऑन। अरे सिंपल एग्जांपल, तुम्हारा अभी nowadays you have the what you call remote, so now you have a remote into your hand, into your TV set, where you speak out the name of the channel and the TV set puts on that particular part, searching for channels. हाँ या ना स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ। So that is what we consider. Okay, so sound is a form of energy and it can be used in order to perform work. Example नीचे लिखना, sound energy can be converted into different forms of energy. Sound energy can be converted into different form of energy. Okay, students. I'm not feeling well. Okay, students. Now, when I speak about classification of wave, the students you can put down as classification of wave. Students, what exactly a wave is? Can anybody define what exactly a wave?
तो तुम क्या बोलोगे? A wave is simply considered as what? Disturbance. Which can be periodic due to disturbance in a medium which can be periodic due to vibration of particle about its mean position. Students, क्या ये clear हुआ? Wave का definition? हाँ students? Yes, sir. Students, what exactly definition of wave is? Students, answer सुनना. Wave is that disturbance which is set up in a medium. Disturbance in a medium which can be periodic. It can be periodic, can be non-periodic also, students. Students, a simple example, तुम्हारे सामने मैंने टब दिया है, स्टूडेंट्स एक टब दिया है, उसके अंदर पानी दिया है और फिर मैं एक साइड के ऊपर पानी को टैप करते रह रहा हूँ, तो कहने से I'm going to get ripples, वेव फॉर्म्स आते रहेंगे, आया ना? तो क्या हो सकता है? वो पीरियोडिक भी हो सकता है. So disturbance in a medium which can be periodic due to, ये पीरियोडिक किसकी वजह से है? Due to the vibration of the particles, vibration or oscillation of the particles. Vibration of the particles about its mean position. Vibration of the particles about its mean position is called a wave. यानी स्टूडेंट्स, अगर किसी ने पूछा वेव का मतलब क्या है, तो तुम्हें क्या बोलना है? Wave is that periodic disturbance. Students, wave is that periodic disturbance in a given medium. In a given medium, due to vibration of particles about its mean position in that medium. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Is this clear? Yes, sir. So please, you write down classification of wave और ब्रैकेट में ये लिखो और फिर उसके बाद में ये पूरा ब्रैकेट में आएगा स्टूडेंट्स और उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन आएगा. एक तरफ होगा इलास्टिक और मैकेनिकल वेव और दूसरी तरफ होगा इनइलास्टिक और नॉन मैकेनिकल. इलास्टिक और मैकेनिकल वेव और दूसरी तरफ होगा इनइलास्टिक और नॉन मैकेनिकल वेव. हैव यू रिटन दिस मच स्टूडेंट्स? इतना लिख दिया है? Yes, sir. अब मुझे बताओ, व्हाट आर इलास्टिक? सी स्टूडेंट्स, द वर्ड इलास्टिक का मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आई गेटिंग इट? एंड द एनर्जी व्हिच इज प्रोपोगेटेड, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. तो वो इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स है. लेकिन जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स को, जहां पे पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं करते स्टूडेंट्स, जहां पे हम मटेरियल मीडियम को कंसीडर नहीं करते, तो वो क्या बन गया? इनइलास्टिक, नॉन मैकेनिकल. यानी यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? हम वैक्यूम के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स. यानी यहाँ पे होगा तुम्हारा मटेरियल मीडियम और यहाँ पे होगा वैक्यूम. इज दिस क्लियर? Yes. So over here students, you have elastic or mechanical waves which is material medium और यहाँ पे होगा तुम्हारा vacuum field. Is this clear?
Now students, your elastic or mechanical waves are those which needs a material medium for its propagation. Examples you can consider, students. Sound waves. And over here, example you can consider EM waves. Friends, can you tell me what is the full form of EM waves? Electromagnetic waves. Yes, absolutely correct. Yeah, electromagnetic waves. Examples सुन दे सकते हो, light waves, radio waves, X-rays, gamma rays, ये सारे हैं. ये सारा कौन सा है? टीवी वेव्स, टेलीविजन वेव्स, ये सारे कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जहां पे they all move with the speed of how much? 3 into 10 to the power of 8 meter per second, students. So non-mechanical या inelastic waves are those waves which can propagate through vacuum. They can have a speed of 3 times 8 meter per second. Examples are what? Light wave, radio wave, X-rays, gamma rays, TV rays, etc. ये सारे non-mechanical waves हैं. Elastic और mechanical waves जहाँ पे material medium चाहिए. Example sound waves. अगर मैं sound waves लूँगा, तो what is velocity of sound? ध्यान से सुनना. Students, what is velocity of sound? Velocity of sound in air at ordinary temperature. ये ध्यान में रखना students. Ordinary temperature. यानी फॉर एग्जाम्पल तुम तुम्हारे घर पे बात कर रहे हो स्टूडेंट्स, तुम्हारे पापा तुम्हारे से बात कर रहे हैं, मम्मा और पापा बात कर रहे हैं, या मॉम तुम्हारे से बात करते हैं, तो उस टाइम पे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड स्टूडेंट्स? 340 मीटर पर सेकेंड. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर को 330 बोला था, 331.5 मीटर पर सेकेंड. वो लैब वैल्यू है, लैपलेस ने बताया था वो. लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे 340 होगा. स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸. यहाँ पे मीडियम की जरूरत है, यहाँ पे मीडियम की जरूरत नहीं है. यहाँ पे एग्जांपल साउंड वेव्स, यहाँ पे एग्जांपल EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एग्री स्टूडेंट्स? ये जो इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स है, वापस ये क्लासिफाई होते हैं दो में. स्टूडेंट्स, दे फर्दर क्लासिफाई इनटू टू काइंड ऑफ वेव्स वी कंसीडर. एक होगा प्रोग्रेसिव वेव. स्टूडेंट्स, एक है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरा है स्टेशनरी वेव. समझ में आ रहा है? एक है कौन सा वेव्स? प्रोग्रेसिव वेव. दूसरा कौन सा है? स्टेशनरी वेव्स. प्रोग्रेसिव वेव्स के अभी और दो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स. 2 more classifications. जिसको तुम नाम क्या दोगे? Anybody can tell me? Anybody can tell me? What is? बोलो. Anyone? Sir, progressive waves का classification होगा transverse wave. Which waves? और दूसरा होगा समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी ये ध्यान से देखना, जब भी तुम किसी को भी पूछोगे ना, अगर कोई टीचर को तुम पूछोगे तो शायद कोई टीचर वेव को, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, वेव को जब भी क्लासिफाई करेंगे ना, तो डायरेक्टली बोलेंगे ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल. लेकिन वेव इज नॉट ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल स्टूडेंट्स. वेव फर्स्ट गेट्स क्लासिफाइड इनटू 2. क्या है? इलास्टिक या इनइलास्टिक. एग्रीड? मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल. इसका एग्जांपल्स EM वेव्स. मैकेनिकल वेव्स का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? फर्दर क्लासिफिकेशन है प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव्स. प्रोग्रेसिव वेव का क्लासिफिकेशन क्या है? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल.
क्या ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? Is this clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Have you all written it, students? Everybody has written it. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. I'm going to make you all to read. Anybody, जिसका भी नाम आएगा has to read all the points right now. Can I erase it, students? Erase कर दूं मैं इसको? Students, can I erase? So 1 minute. Yes, who's going to read it? Anyone? Gauri, Richa, Parth, Nayan, Adityagiri, Aryan, Dakshraj, Danish, Devans, Dhairya, Jay, Krishna, Rahul, Chaudhary, Richa, Riya, Samir, Shubham, Suchni, Tarang, Vedant, Vivek, Rajesh, anybody who wants to read it out from the very first statement which I give it to you till the last. Anybody? अभी देखो nobody is going to raise hands for it क्योंकि बहुत जन ने incomplete ही रहता है, सारे पॉइंट्स लिखे नहीं है. यही होता है तुम्हारे लेक्चर्स में स्टूडेंट्स, तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिस कर देते हो. जो कुछ भी व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है या कोई टीचर प्रेजेंट करता है, यू डोंट पुट इट डाउन इनटू योर बुक्स या you don't listen to them properly, and then when somebody asks you are not able to answer. Can anybody speak it out, students? इसको erase कर दूं students? क्या मैं erase कर सकता हूँ इसको? Yes, sir. Okay. Yes, anybody can speak it out, students? What all things I told you? So can I? Yeah, बोलो. From the very first point, huh? The sound, external physical agent that produces in us a sensation of hearing. Okay, be loud and take a mic closer to your mouth still, okay? And be loud. Yes. And students, listen to her very properly, okay? She's answering. Riya is answering. Bolo, Riya. First point, sound waves are electric or mechanical waves and need a material medium for its propagation. Thus, sound cannot propagate through vacuum. So, give reasons to return. Yeah. Okay, first one, we people on the earth cannot hear the explosions taking place inside the sun. First point, sound waves are elastic or mechanical waves, need a material medium for its propagation, thus cannot propagate in vacuum. Since there is a vacuum between the layers of atmosphere, so surrounding the earth and the sun, sound cannot reach to the earth. Hence, we cannot hear the explosions taking place inside the sun. Very good. Second, one cannot hear on moon. First point, gravitational acceleration on the moon is 1/6 of the value on earth. Second point, therefore there is no atmosphere on the surface of moon. As a result, there is no vacuum. Sound waves are As elastic a or result, mechanical. hello. As a result, there is vacuum. You said it no vacuum or what? Yes, sir, vacuum, sir. As a result,
there is vacuum. No vacuum का मतलब तो medium होगा. Please remember that no. हाँ. Okay. See, Sound, देखो students, yes. students listen carefully. तुम लोग भी सुन रहे हो. तुम लोग भी सुन रहे हो, लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो. तुम उसका इंग्लिश सुन रहे हो. तुम उसका इंग्लिश सुन रहे हो. मैं यहाँ पे फिजिक्स सुन रहा हूँ उसका. See, this is the problem with your studies is. And तुम लोग ने blindly accept कर दिया कि रिया इंटेलिजेंट है तो रिया मिस्टेक्स नहीं कर सकती. ये तुम्हारे में प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स. अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो यू कैन फाइंड आउट. ये इसको पता है कि वहां पे वैक्यूम ही है, लेकिन ये उसका मिसप्रिंट हो गया लिखने के लिए. एंड फर्स्ट पॉइंट व्हेन आई रोट इट, डिड यू राइट इलेक्ट्रिक या इलास्टिक? Sound waves are elastic, na? Yes, elastic. Okay, fine. Carry on. Continue further. So sound waves are elastic mechanical waves, need a material medium for its propagation, thus cannot propagate in vacuum. Hence, one Yeah. cannot hear or move. Second point, sound is produced when an object is set into vibration. Example, musical instrument, membrane instrument, that is drum, solid string instrument, example guitar, liquid jal tarang, gases flute. Absolutely correct. Third point, velocity of sound is maximum in solids, less in liquids, and least in gases. Example, at 0 degrees Celsius in iron rod, velocity of sound is approximately equal to 5,100 meters per second. At 0 degrees Celsius in H2O, velocity of sound is approximately equal. Pure water. It's pure Okay, water. yes. Velocity of sound is approximately equal to 1,435 meters per second. At 0 degrees Celsius in air, dry air, velocity of sound is approximately equal to 331.5 meters per second. Correct. Velocity of sound is inversely proportional to square root of elasticity of medium. Hence, since elasticity, so since है ना? Since. Since elasticity of solids is greater than elasticity of liquids, is greater than elasticity of gases. Therefore, velocity of sound is maximum in solids and least in gases. Yes. Sound is a form of energy and it can be used in order to perform work. Sound energy can be converted into different forms of energy. After that, classification of waves. Wave is defined as disturbance in a medium which can be periodic due to vibration of particle about its mean position. Correct. Waves, some other waves can be classified into elastic or mechanical waves and inelastic or non-mechanical waves. Example of elastic or mechanical wave is, so कैसे बोलूँ अभी? Sound waves. Sound. Okay, sound waves. And inelastic or non-mechanical waves का electromagnetic waves, that is light waves, radio waves, X-rays, etc. Yes. TV waves. Students, जो तुम रेडियो FM सुनते हो ना, रेडियो FM 91.1, रेडियो मिर्ची, रेडियो चिली, चिक्कू, सब सुनते हो ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. और स्टूडेंट, जब भी तुम तुम्हारे टीवी सेट खोल के बोलते हो ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते हो ना, तो वो टेलीविजन फ्रीक्वेंसीज है. फ्रीक्वेंसीज जो तुम स्कैन करते हो रिमोट से, तो वो सारे टेलीविजन फ्रीक्वेंसीज है. तो वो भी टेलीविजन वेव्स आल्सो EM वेव्स, रेडियो वेव्स आल्सो EM वेव्स, माइक्रोवेव्स आल्सो EM वेव्स. ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स है स्टूडेंट्स. इसलिए तुम्हारा सेकंड लास्ट चैप्टर EM वेव्स है. फर्दर रीड. Velocity of sound at room ordinary temperature is 340 meters per second. And speed of light of electromagnetic waves? 3 into 10 raised to 8 meters per second. Absolutely. उसको जो मैंने C में लिखा है स्टूडेंट्स, स्पीड को मैंने B नहीं लिखा है, C. Students, C stands for speed of light in vacuum. Speed of electromagnetic waves in vacuum, and that is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So are you getting it? So EM waves goes with tremendous amount of speed. ये ध्यान में रखना. Next.
So elastic or mechanical waves are further divided into Further progressive waves, classified. classified into progressive wave and stationary wave, and progressive wave is further classified into transverse wave and longitudinal wave. Absolutely correct. Only two more statements and we'll wind up the session. Students, मुझे कोई बता सकते हैं प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या, स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या? What are progressive wave and standing waves? Anybody? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स? Students, when you were a kid or when you were small, you must have gone to the beach. So at the beach also there was one wave coming at your feet. When your dad was a kid, when your mom was a kid, in that time also there was a wave approaching to their feet. Ayana, Yes. Sir. when your grandpa or grandmom were kids, in that time also there used to be a wave coming and reaching the feet. Yeah. हाँ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है तभी भी वो जब भी छोटे थे या तभी उस टाइम पे भी तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा तुम उस टाइम पे भी शायद वहां पे उस टाइम पे भी वेव आते होंगे और दे मस्ट हैव टच द फीट्स. आया ना? Yeah. तो क्या आज तक ये वेव कभी रुका है? आज तक कभी रुका है वेव? हाँ स्टूडेंट्स, No. कभी इसके बारे में सोचा तुम लोगों ने? अरे हाँ यार, समुद्र का पानी हमेशा वेव होता है, उसमें तो वेव तो हमेशा होगा. Students, these are progressive waves. They are going on and on every time. और अगर किसी वेव को प्रोग्रेसिव नेचर में रखना है, उसको आगे बढ़ते ही रहना है, तो उसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस मीडियम के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वेव को क्रिएट करने के लिए मीडियम के अंदर इनर्शिया की जरूरत है. स्टूडेंट ध्यान से सुनना, द मीडियम नीड्स इनर्शिया, the medium needs elasticity. समझ में आ रहा है? There should be a constant source needed for propagation of wave. एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो वेव फॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? ये जो सी वेव्स होते हैं, समुद्र में जो वेव्स आते हैं, ये हमेशा फॉर्म होते हैं, कौन उसको क्रिएट करता है? हाँ स्टूडेंट्स, कोई है समुद्र के अंदर? कोई है क्या? समुद्र का देवता है कोई जो 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 वेव्स क्रिएट करते हैं अंदर बैठे बैठे? हाँ स्टूडेंट्स, who's creating those waves? Anybody knows it? Students, anybody knows it? This is what the problem is. Has anybody went to Nehru Planetarium, Nehru Science Center? हाँ स्टूडेंट्स, नहीं गए ना? वहां पे ये छोटे बच्चों को बताया जाता है. Students, is the gravitational pull of the moon. Gravitational pull of the moon, students, creates these things. तभी जाके तुम्हें टाइड्स मिलते हैं स्टूडेंट्स. हाई टाइड्स और लो टाइड्स का टाइमिंग भी फिक्स रहता है. Are you getting it? तो ये पार्ट ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. तो सोर्स तुम्हें, यानी मैंने क्या बोला, the medium should have inertia, should have elasticity, source should be constant, and the resistance offered to the propagation of wave is very small. यानी वेव को प्रोपोगेट करने के लिए बीच में रेजिस्टेंस नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है? वेव को प्रोपोगेट करने मुझे वेव कंसिस्टेंटली में चाहिए, तो आई डोंट वांट टू ब्रेक द वेव. नाउ अ सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ. हैव यू बीन टू डॉकयार्ड्स? कभी कभार जब जहाँ पे डॉकयार्ड्स पे गए हो, कभी शिपिंग में, जहाँ पे शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स आती है और वहां पे गुड्स चढ़ते और उतरते हैं. शिपिंग में जहाँ पे गुड्स को अनलोड करते हैं और लोड करते हैं, कभी देखा है उस टाइम पे? अगर बाय चांस उस डॉकयार्ड के आसपास यानी समुद्र के अंदर हाई टाइड्स आता है या वेव ज्यादा आते हैं, तो मुझे बताओ, इज इट इजी फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स? Students, does it becomes easier to load and unload the goods when the tides are high? Students,
अरे कुछ समझ में आ रहा है? What am I trying to speak? Students, while loading or unloading का कुछ reaction नहीं यार तुम लोगों का. Really are sitting mum, like literally nuts, as if nothing is known to you all. It seems like that. What am I speaking even that is also not clear to you all. Students, when you go to shipping or shipping dockyards, you must have found out that there are ships which are loaded and unloaded. So they are closer to the sea faces. तो जब भी हाई टाइड्स होते हैं तो उन लोग को गुड्स को लोड या अनलोड करने के टाइम पे बहुत टाइम लगता है. वो सी को शांत होने के लिए रुकते हैं. अगर शांत नहीं होता है तो जानबूझ के ऑयल डालते हैं सी में. ऑयल डालने से द सी वेव्स बिकम सबसाइड, यानी एक रेजिस्टेंस डाल दिया तुमने. तो प्रोग्रेसिव वेव अगर चाहिए तुम्हें तो द मीडियम शुड नॉट ऑफर रेजिस्टेंस. तो समझ में आ रहा व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? होप यू Yes, अंडरस्टैंड. sir. What are standing waves, students? What are standing waves or stationary waves? Students, what are standing waves or stationary waves? Can anybody tell me that? Students, the wave in which energy nor even goes forward nor even goes backward are called standing waves. Energy is confined in a given length. Best example, string of a guitar. Students, गिटार के अंदर एक साइड रिजिड है, दूसरी साइड भी रिजिड है. सिर्फ स्ट्रिंग ऊपर नीचे होता है. वेव जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस. So those are standing waves. Students, standing waves में energy ना ही आगे जाती है ना ही पीछे जाती है. Energy is confined in a particular region. Progressive wave में energy will go on and on. ये ध्यान में रखना. फिर progressive wave का classification है transverse and longitudinal. Transverse are in form of crest and trough. Longitudinals are in form of compressions and rarefactions. Hope this part is clear to all of you all. Is it clear, students? तो transverse का क्या बोला आपने? Transverse waves are in form of crest and trough. Sea waves are transverse. Okay. Okay. And sound waves, which I'm speaking right now, or when your mom speaks to you, they are in form of compressions and rarefactions. Ye part I'll be discussing it in the next lectures. Is that clear, students? Yes, sir.